Welcome to my YouTube channel. So today we solve the problem of count spanning trees in graph, right? So the problem is, I explain the problem. If I will read the problem, you are not understand. I will explain the problem in a very short way, right? So in that problem, we need to count how many different spanning trees can be formed from a connected undirected graph. This is the undirected graph because there is no any directions. So this is the undirected graph, and we have to count how many different spanning trees can be formed from connected undirected graph. That is a very famous problem of Kirchhoff's matrix tree theorem. The same thing, right? Kirchhoff's matrix tree theorem. In that it says number of a spanning tree is equal to determinant of any cofactor of the graph's Laplacian matrix. This is the mathematical concept where we have to read the Kirchhoff's matrix tree theorem, and where we use the Laplacian matrix. We just have to think where we can use the Laplacian and any other things. Yeah, so that is the problem where we use the Laplacian theorem matrix, right? So understand the spanning tree. What is the spanning tree? So spanning tree contains all n vertices, right? This is n is equal to 6 and has exactly n minus 1 edges. Yes. What is the edges? This is the edges 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is the edge, right? No, sorry, 6 no, what of 5? 1, 2, 3, 4, 5. This is the edge. Is connected, has no cycle, right? This is the spanning tree. मीन्स कंटेन ऑल एन वर्टिसेस, सारा वर्टिसेस को वो कनेक्ट करेगा. फिर उसका जो एज होगा वो सारा जितना नोड है उससे एक कम रहेगा. तो 6 नोड, 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 यहाँ पे एजेस रहेगा. तो 5 एजेस है, n-1 एजेस. सब एक दूसरे कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड है. और हैज़ नो साइकिल, इसमें से साइकिल नहीं बनना चाहिए, तो साइकिल नहीं बन रहा है, राइट? सो इन दैट वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल लाइक n इज इक्वल टू 3, राइट? एंड एज इज 0 1 0 2 एंड 1 2, राइट? सो इसमें क्या होगा, 0 से 1 रहेगा, 0 से 2 रहेगा और 1 से 2 रहेगा. तो इसमें क्या हो गया, पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज रिमूव एज 0 to 1. इसमें से एक क्यों, इसमें सर्कल बन गया. कैसे? तो 0 से 1 आए, ऐसे 0 से 2 चल गए, लेकिन फिर 1 से 2 चल गए, मतलब एक सर्कल बन गया. तो इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमूव एज 0 to 1 या फिर रिमूव एज 0 to 2 या रिमूव एज 1 से 2. सो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो इसमें लैप्लेशियन थ्योरम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो डिग्री ऑफ नोड आई, राइट? एंड इफ -1 इफ एज एग्जिस्ट बिटवीन i to j, अदरवाइज 0. अगर मेरे पास कोई भी एज में मतलब पहले क्या, डिग्री ऑफ नोड आई, सारा का डिग्री निकालना. डिग्री मतलब कि एक नोड से मेरे पास, मतलब एक नोड से कितना जगह जा रहा है, दैट इज़ द डिग्री. ठीक है. अब क्या होता है, -1 इफ एज एग्जिस्ट बिटवीन i to j. अब चेक करना है कि अगर i to j एक भी मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो -1 उसको कर दो, और नहीं तो 0 कर दो. ठीक. फिर ट्रायंगल ग्राफ. अब क्या करेंगे, उसी में से रिमूव एनी 1 रो एंड कॉलम. अगर कहीं सर्कल बन रहा है तो उसमें से एक रो एक कॉलम को हटा देंगे ना. रिमूव लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम. नाउ फाइंड डिटरमाइन. मतलब इसमें से एक क्या ना कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा पता है, मैट्रिक्स का 2 -1 -1 2, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है. कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, तो कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा 2 -1 एंड -1 2, ये कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है. तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला होता है 2 × 2 -1 एंड -1 इज इक्वल टू 3. So the total spanning tree is 3. So that is the formula here. So approach क्या रहेगा इसका, create a Laplacian matrix, remove 1 row and 1 column, find determinant of remaining matrix, determinant is equal to answer. So इसमें से तो बिना कुछ समझना पहले कोड लिखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या इसका टाइम कंप्लेक्सिटी रहेगा, है ना. चलो बिना लेट किए एकदम फट से लिख देते हैं हम लोग कोड, है ना. तो चलो स्टार्ट. पहले क्या करते हैं, इसमें क्या ना एक फंक्शन है, तो फंक्शन से पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी का पहले लिख लेते हैं, है ना.
तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो एज केस होता है, स्पेशल केस क्या होता है इसमें, इफ़ n इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, बस। सबसे पहला जो एज केस है वो यही है, ठीक है। नाउ बिल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के लिए वेक्टर 2D वेक्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के लिए। फिर डबल, है ना, फिर लैप्लाशियन का एक ले लो, और फिर एन वेक्टर इंट, सॉरी ना, वेक्टर, सॉरी डबल, ठीक है, एंड एन जीरो, राइट। नाउ फॉर auto address of e as is int u is equal to e0, int b is equal to e1, Laplacian of u and v plus plus, sorry, that is the v, that is the v, where is the v, this is, right, u and sorry, u and u, first is u and u, that is plus plus, right, and then Laplacians of v and plus plus, correct. Now Laplacians of u and v plus plus and Laplacians of v and u plus plus, very simple. Now come and check vector double cofactor of n minus 1 and vector double of n minus 1, right. This is now for int I is equal to 0, I greater than is equal to n minus 1 and I plus plus. Now there is one more loop for int j is equal to 0 to j is equal to greater than is equal to n minus 1 and j plus plus. Now we just have to check cofactor. Where is the cofactor? I just write here, there is a cofactor, so write the cofactor, copy paste, because there is a lot of time we just see the error of spelling mistake, lap of I and j, right. Now determine gives answer, determinant give answer, so the return of determinants of cofactor of n minus 1, राइट, दिस इज। तो अब इसको उठाते हैं और इसका फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, बिना लेट किए। ये फंक्शन ही सब चीज़ करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर डबल of address of matrix of int n, right. Now here is double determinant is equal to 1 for int I is equal to 0, I greater than is equal to n and I plus plus, right. Now int pivot is equal to I and for int j is equal to I plus 1 and j greater than is equal to n and j plus plus, right. Now if abs of mat of j to I, right, and greater than of abs of mat of pivot of I, right.
Now here is pivot is equal to j. Now as to if pivot is 0, then determinant is equal to 0, right? So if abs of mat of pivot is equal to mat of I, right? If this is right, if you see this is, then 1 to the power e to the power minus 9, right? And then return 0 if pivot is not equal to I, then swap the mat of pivot of mat of I, right? This is, and determinant of n2 is equal to minus 1. Determinant of E is equal to mat of I and j, right? Now here I just have to write the 4 int, sorry, not 4 int j is equal to I plus 1 and j greater than is equal to n and j plus plus double factor is equal to mat of j and I and mat of I and I, right? And then 4 int k is equal to I and k greater than is equal to n and k plus plus. Now mat of j and k minus is equal to factor of into mat of I and k, right? Now I just have to return round, how much round of that, right? Now just compile and see. I think there is error. The error is the long, right? Line number 14, the 14 is error. What is the error here? Matrix of, okay, I just see what is the problem. Yeah, so now here we can see I just found the error and I just resolved. The error is nothing, I just have to some problems in the loop. Now I just run and check it will run or not. Yeah, it will run, and try to submit it. Yeah, it will submit it. So thank you for staying till the end, and please like and subscribe my channel. Yeah, so what is the time complexity here, right? That is a very good question. So the time complexity is, since n greater than is equal to 10, so determine using Gaussian's elimination. So it will take the order of n cube. That is very efficient here, right? Yeah, so time complexity is order of n cube. Thank you.